Yo, what is up, my friends? Welcome to another episode of Dostcast. मेरा नाम है विनम्र कसाना. If you're new to you know what to do, bro. Subscribe करो यार. कितना बुलवाओगे मेरे से? You know how it is. A million. Here we come. Today's episode is with my good friend Hardik Tuteja. उसने मेरे लिए Dostcast की लोग शर्ट बनाई that all of you hated. Fuck you. I think the logo is great in my opinion. आज के पॉडकास्ट के अंदर भाई LA रिटर्न हार्दिक तुटेजा ने बताया कि बर्निंग मैन के अंदर किस किस प्रकार की अजीबोगरीब रहस्यमय घटनाएं घटती हैं, किस तरह का म्यूज़िक चलता है, किस तरह लोग पागल होते हैं, एक ह्यूमन एक्सपेरिमेंट होता है, वो कैसा होता है उसने, और सस्टेनेबल फैशन प्रैक्टिसेस के बारे में बताया. अगर आप फैशन में इंटरेस्टेड हो, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं थक गया हूँ ब्रो ये टॉम हिलफिगर की टी शर्ट पहन के, तो दिस इज़ अ पॉडकास्ट फॉर यू. दिस इज़ अ पॉडकास्ट फॉर यू. अगर आपको जानना है कि LA के मशहूर अमीर लोग किस तरह से पार्टी करते हैं बर्निंग मैन में जाके, हाउ दे रॉक देयर सॉक्स ऑफ एंड डू माइंडफुल मेडिटेशंस एंड फन एट बर्निंग मैन. अच्छा पॉडकास्ट यार, देखो मजा आएंगे तुम्हें. द एपिसोड विद हार्दिक तुटेजा बिगिंस इन 3, 2, 1. व्हाट्स अप ब्रो, वेलकम टू दोस्तकास्ट. क्या हाल है? बढ़िया ब्रो, बहुत अच्छा लग रहा है आके. बहुत अच्छा लग रहा है मुझे भी आके. हम लोगों ने कोल्ड प्लंज करा और बेहद हार्दिक तुटेजा स्पेशल टी का सेवन कर भी रहे हैं. पुट्स यू इन द फ्लो. ये दोस्तकास्ट का वो जाना चाहिए नॉर्म. आओ, डुबकी मारो, चाय पियो और तब बात शुरू होगी हमारी. ट्यूबवेल. हाँ, ऐसे मतलब गेस्ट के लिए भी पूरा एक्सपीरियंस होना चाहिए ना. आई डोंट थिंक हर कोई इंसान करेगा. तेरे को पता, मेरे को पता था तू ऐसी इsoteric एक्टिविटीज़ में इंटरेस्टेड है, इसलिए मैंने तेरे को बोल दिया कि भाई चल हम कर लेते हैं. और मैं सरप्राइज था कि तू पहले से ही उस वाले जोन में आ गया कि हाँ आंखें बंद करनी है, मेडिटेट करना है. यूजुअली लोगों की फर्स्ट इंस्टिंक्ट होती है, फटती है उनकी जब कोल्ड प्लंज में जाते हैं. नए खिलाड़ी थोड़ना है भाई. मैं वही तो मैं समर को कह रहा था बैठ के, मैंने कहा देख भाई पुराना खिलाड़ी है ये, बहुत शावन से मिल चुका है, इसको बहुत चीज़ें पता है. नहीं, कोल्ड प्लंज तो यार पिछले 1.5-2 साल से मैं ठंडे पानी से ही नहाता हूँ. और आइस बाथ्स भी बहुत किए हैं मैंने, है ना. और मैं अभी ऋषिकेश में भी था, तो वहाँ पे भी हम ठंडी में पूल में चले जाते थे. पूल में या फिर नदी में? नदी में भी गए एक दिन, बट हमारे योगा आश्रम में ही पूल था ना, तो हम ऐसे योगा करके सीधा पूल में कूद गए. मैं और एक प्राग का बंदा था वो, और फिर ऐसे देसी लोग देख बोलते थे ये पागल लोग आ गए. क्यों? क्योंकि यार ठंड में तो मैं ऐसे पानी में जा रहे हो. कोल्ड प्लंज तो यार इंडियंस को समझ नहीं आता कि ठंड में तुम ठंडे पानी से कैसे नहा सकती हो. गीजर लवर हैं देश में बहुत सारे. एग्जैक्टली. बट नहीं, मोस्ट पीपल यूज हॉट वाटर टू शावर. ऑल्दो आई आल्सो एंजॉय हॉट वाटर. उसके अपने अलग मजे हैं. जब तुम ऐसे थकार के आते हो और रात को गर्म पानी अगर हो रखा होता है और नहाओ तो फिर. हाँ, मुझे विनंता ने बताया था, मेरी बहन ने, कि दिन में बिफोर सनसेट कोल्ड वाटर और आफ्टर सनसेट अगर तुम शावर ले रहे हो या बेथ कर रहे हो तो फिर हॉट वाटर. बेस्ड ऑन कोई रूल है, पता नहीं, कहीं पढ़ा होगा उसने. बहुत सारे रैंडम रूल्स हैं. वो अपने साइकोलॉजिस्ट न्यूरो साइंस टाइप की है ना, तो मतलब मैं से उनसे साइटेशन वगैरह नहीं पूछता. ट्रस्ट कर लेता हूं, ट्रस्टेड सोर्स. फेयर. आई थिंक दैट मेक्स सेंस ब्रो. या पर नो, मैं तो यार आई एम ग्लैड दैट आई डिड द कोल्ड प्लंज, क्योंकि मेरे को बॉडी में भी बहुत अच्छी टिंगलिंग हो रही है. आई फील लाइक वेरी रिलैक्स एंड एट ईज. ऐसा कुछ ना कुछ रिचुअल होना चाहिए बिफोर एनी एक्टिविटी जहाँ पे तुम कुछ कोलैबोरेशन कर रहे हो. Exactly. तू अपनी कपड़ों की निटिंग भी करता है तब भी कुछ ना कुछ एक चीज़ होनी चाहिए जिससे कि तुम फ्लो में आ सकते हो या फिर फोकस कर सकते हो. या जैसे जो हमारी टेलरों की टीम है वहाँ पे, तो वो कहते हैं कि भैया ध्यान लगाते हैं आके, तो वी समटाइम्स, आई मीन इट्स नॉट लॉन्ग मेडिटेशन सेशंस, बट they know about this meditation and yoga and stuff, so everyone knows, sometimes we get together, or it's a creative process, so getting into these activities and doing this helps with the team. और team building में भी बहुत अच्छा होता है ना, because you really, like, even if it's for 3 minutes, 2 minutes, in that moment you're all doing the same thing, so you're all tuning your frequency to the same level regardless of where you come from, where you're going. तो आई मीन इसमें कोई स्पिरिचुअल वगैरह कुछ नहीं है. इट्स वेरी लॉजिकल, काइंड ऑफ साइंटिफिक, वुड मेक कॉमन सेंस काइंड ऑफ डील. तो आई नो दैट बहुत सारी जगहों पे ग्रुप रिचुअल्स ग्रुप को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं. जैसे कि आई रिमेंबर मैं यूरेका में गया था 7th क्लास में, तो हम सब हाइक कर रहे होते थे. आउटडोर सर्वाइवल वाज द पाथ दैट आई सिलेक्टेड. 4-5 पाथ्स होते हैं ऐसे यूरेका समर कैंप्स में. एंड बहुत फटरी होती थी क्योंकि इतनी आदत नहीं होती थी कि 14-15 किलोमीटर चलना है ऊपर नीचे. हम दिल्ली फरीदाबाद के वैसे ही. हाँ, मतलब हमें वॉकिंग की कहाँ ही आदत थी, कोठी वाले कम्यूटिंग बराबर. तो फिर वो ऐसे एंथम बोलते थे, दम लगा के हईशा, और हम सब बोलते थे, और भारत माता की जय, जो भी कुछ है. और उससे एक लगता था कि हाँ हम लोग सब एक चीज़ के खिलाफ हम सब साथ में ट्रायम्फ कर रहे हैं. तो ये चीज़ मेरे को बहुत बढ़िया लगती है कि जब
कोई भी किसी की ज़िंदगी में दिक्कत आती है, या फिर ऐसी जैसे कोई आर्मी के लोग होते हैं, कोई ऐसा कोई शमैनिक रिचुअल होता है, जब कोई बाहर साइकेडेलिक्स एक्सपेरिमेंट करता है, सब लोग साथ में वो करते हैं, तो यू फील लाइक अ सेंस ऑफ कम्युनिटी. अदरवाइज everyone's playing a single player game, and after a while you get tired of playing the single player game because you're like, bro, what's the point? It's always me against the world, me fighting and trying to see कि मेरे को कैसे कुछ मिल सकता है. And if I be in a group तो फिर कुछ बीटी हो जाएगी. But usually मैंने ऐसे देखा है, जब से ऐसे ग्रुप रिचुअल करते हैं तो अच्छा ही लगता है. It feels like it's an older part of our ancient evolutionary circuits. Doing a group रिचुअल्स तो ट्राइब्स में चलते ही आ रहे हैं बहुत टाइम से. भाई हम सोशल बीइंग्स हैं. तुम इंसान छोड़ो, जानवर भी लाइक दे गो इन ग्रुप, सर्टन एनिमल्स, सर्टन मैमल्स. तो इट्स नेचुरल कि, और हम इतने पावरफुल, ईच बॉडी, ईच माइंड इज सो पावरफुल. तो जब तुम साथ होते हो, हाँ, अब तू सोच, यहाँ देसी उसमें भी कीर्तन होती है आंटियों के, राइट? दे गो एंड दे फील कि मतलब उनको ये एलिवेटेड एक्सपीरियंसेस होते हैं. दैट्स वाई इट्स अ थिंग फॉर सो लॉन्ग. तो सबके अपने अपने ऐसे क्लस्टर्स टाइप बने हुए हैं. एंड मे बी इट्स नॉट स्पोकन अबाउट, लाइक कॉन्शियस ब्रेन में इतना लोगों का है नहीं कि ओ कम्युनिटी ये वो. बट आई मीन लाइक इंडिया में तो फुल कम्युनिटी सीन है ही हर जगह. कहीं भी इंसान अकेला नहीं दिखता. इंडिया में तो जो लोग टेक में कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं, दे शुड जस्ट गो टू द स्ट्रीट. आई एम बिल्डिंग कम्युनिटी फ्रॉम माय ऐप, यू शुड ट्राई ऑन द स्ट्रीट. सबसे बढ़िया कम्युनिटी उसमें होती है यार. वो कौन सा वो फेस्टिवल होता है जिसमें मटका फोड़ते हैं? जन्माष्टमी के अंदर होता है ना भाई. वो क्या कम्युनिटी वाला सीन है. हाँ, वो तो बिल्कुल ग्रुप स्ट्रक्चर तुम फॉर्म कर रहे हो कि मतलब फिजिक्स, वहाँ पे कम्युनिटी, सब सीन आ जाता है. तूने कभी लाइव देखा है वो? ऐसे बचपन में देखो, छोटे मोटे लेवल पे ऐसे, ये छोटे मोटे मतलब 3-4 फुट वाले. ये यहाँ पे मटका है, 2-3 लोग खड़े होकर फोड़ दिया. भाई मेरे को यार अब एकदम ऐसा मन आया कि मेरे को देखना है भाई. वो काफ़ी क्रेजी होगा, और देखना है कोई बंदे को गिरते हुए भी, फिर मैं हंसूँ. ऐसे बॉम्बे वगैरह में होगा या वहाँ पे होगा. कहाँ पे मंदिर है अभी कृष्ण जी का? वृंदावन. या नहीं, बट इंडिया के इस बार मुझे तो इंडिया से प्यार हो रहा है. मतलब क्यों? कि अभी ना, या तो ये भी है कि इंडियन ट्रेंड्स, इंडियन कल्चर, एवरीथिंग इंडियन इज पॉपिंग. तो मे बी द वेस्टर्न हार्दिक इज ऑल्सो फॉलोइंग इन लव विद इंडिया. बट ऐसा नहीं हो रहा कि घर आके it's an exciting time to be an Indian for sure. Yeah, or and everyone's saying that. Culture is saying that. Clothes, designer jewelry, economy, entrepreneurs भी कह रहे हैं build something in India. More or less government भी India को मतलब like बढ़ाने की कोशिश कर रही है, whatever capacity that they're doing it. There's a lot of optimism in India right now. Yeah, because what's happening is, like, let's look at tech or fashion. Both of them fall in the same category where it's been for decades now, all of that stuff is being produced in India. Like the true work, the true energy, the true hands, and the true minds also, to a lot of extent, are Indian minds and Indian hands. What Indians haven't been good at is presenting it and marketing it and really being confident in themselves and being the voice and the faces of it. यार 4-5 टाइप के लोग कर तो रहते हैं कि जो बाहर एक ब्रांड सेटअप करते हैं, like what you're doing right now, where they're like, this is, for example, this particular cloth is sourced from a clothes mill run in Rajasthan by all women. तो फिर वो उसकी सोर्सिंग की जर्नी दिखा देते हैं. ऐसे तो करते ही हैं, बट it's not a mainstream concept. Like, क्योंकि बाहर से अगर गोरे भी आते हैं तो अंजना फ्ली मार्केट में जाके एक हिप्पी पैंट खरीद लेते हैं, सेम टाइप के चले जाते हैं. And that's probably the worst of our tailoring, if you think about it. Yes, absolutely. And like, again, to your point, even those brands, they give credit to India, not saying Indians are not given credit for. I mean, even though I would argue against that as well, कि if you go to Zara or H&M or a lot of big brands, जैसे ये Mandarin collar, Eastern cut होता है, like, all these inspirations are not necessarily from India, but from the East, from these traditional clothing. Chinese collar, इसको तो Chinese collar नहीं बोलते. Mandarin, Chinese, फिर ये कुर्ता collar भी हो गया, right? Like, I mean, this goes centuries back. तो जहाँ पे. But is it not from? ये ऐसा तो नहीं लगता मेरे को ये इंडिया से है. I think it is from China, no? Well, यहाँ पे इंडियन लोग उसको Chinese collar बोलते हैं. वैसे it's known as Mandarin collar, which traces it back to China, correct? But you could argue also कि ये कुर्ता भी, like, it's a similar collar, right? हमारे कुर्तों में typically तो they would have no collars, right? Just like collarless कुर्तास, just मतलब just जैसे round neck t-shirt होती है, ऐसा ही कुर्ता होता है ना typically. तो collars are a fairly new concept. I mean, I don't know, I'm asking.
नहीं कुर्ता मिक्स चलता है, तू नोटिस करेगा तो थोड़े कॉलर वाले भी होते हैं, बट यस दिस इज पठानी में होता है कॉलर ज़्यादातर। हाँ पठानी में होता है। हाँ। मैं तो कॉलर वाले कुर्ता ही पहनता था, मैं इसलिए ही बोलूँगा। मेरे को तो पठानी बहुत पसंद है भाई, साथ में उसमें वो जो मैंडेटरी वो साइड में वो लेपल लगाते हैं ना, मेक्स नो सेंस, यहाँ पे क्या रखने वाले हो। बड़ा कौन सा लेबल? यार लेपल नहीं, एज इन लूप्स लगाते हैं ना पठानी के यहाँ पे साइड पे एक एडिशनल हाँ, लूप, बटन जो बटन होते हैं बटन के साथ वो आई डोंट नो, इट्स दैट्स जस्ट एस्थेटिक राइट, देयर इज नो Yeah. रियल लाइक रीजन फॉर इट। no functionality to it. But coming back to the point ki India was given credit, but before there were brands selling India, right? Like Western people coming to India, getting inspired and really योगा taking that and selling it there. But now what's been happening these last 4 or 5 years is Indian people themselves are putting out brands and really eliminating, like they're conquering everything from source to retail, right? And they're selling it as Indian craftsmanship, but also an Indian brand, which has been a change where people are spending more money on Indian brands. क्योंकि पहले तो ये होता था कि बाहर का ठप्पा है तो ज़्यादा पैसे दोगे, बट अब ऐसा होने लग गया है कि इंडियन ब्रांड भी है तो पीपल आर स्पेंडिंग मोर एंड मोर। यहाँ के लोग स्पेंड कर रहे हैं या फिर बाहर के लोग स्पेंड कर रहे हैं? both I would say. Surprisingly इंडिया में भी अब ऐसा हो चुका है, but the funny thing is कि इंडिया, for Indians to spend money on an Indian brand, first that Indian brand has to grow outside, right? कि वो full circle होके ही आता है, but I mean that's the, You look at Bose, Bose का जो स्पीकर है, जो कंपनी है राइट, इट flew up in the US, फिर इंडिया के अमीरों ने बोला हम भी बोस के स्पीकर लेंगे अब। हाँ exactly but वो इंडियन बंदा है, बट वो है तो यूएस कंपनी। कल मैं अपने दोस्त के साथ एक बैठा हुआ था और वो मुझे बता रहा था कि वो अपना नया घर बना रहा है, और ना उसने मेरे को बोला कि मेरा जो आर्किटेक्ट है वो कह रहा है आप कोलर लगाओ और ये सब जो बाथरूम की फिटिंग्स होती है कोलर वगैरह, कहता है मेरे को कजारिया लगाना है बिकॉज कजारिया इज इंडियन, इट्स मोर प्रैक्टिकल फॉर मी एंड आई लाइक द डिजाइंस। सो द आर्किटेक्ट वाज इन डिसबिलीफ, आप कैसे कर सकते हो ऐसे, लाइक इट सर्व्स टू प्रूव दैट वो जो इंडियन ब्रांड से लेके ना कि मेरे घर में कजारिया की फिटिंग लगी, वो स्टिल अभी भी टीवी के ऐड देख लोगे आप, बट यू वुड स्टिल, अगर तुम्हें कोई आर्किटेक्ट भेजेगा ना तुम कोलर जैकवार यही सब लोगे। या वो अभी अब बाथरूम फिटिंग में पता नहीं इंडिया कितना ट्रेंडिंग चल रहा है, बट जैसे का कपड़े, फर्नीचर जोधपुर में अभी गए, दुनिया का फर्नीचर भाई, सारी बड़े बड़े ब्रांड्स का फर्नीचर जोधपुर में बन रहा है, मतलब इवन लाइक द मॉडर्न कंटेम्प्रेरी ऑल द मिनिमलिस्टिक काइंड जैसे गुडर टाइप के। हाँ एग्जैक्टली और इट्स ग्रेट टू सी राइट कि जो ये मैन्युफैक्चरिंग यहाँ से चली रही है, अब इंडियन ब्रांड्स खुद अपना ठप्पा लगा के उस पर बेच रहे हैं, which says a lot about the culture here and the growing appreciation amongst Indians, but also amongst the world here. Yeah, you know, I've almost completely moved away from buying clothes at big name brands and malls. The last thing I bought was a suit, क्योंकि अनिरुद्ध की शादी थी और इमरजेंसी में मेरे को लेना पड़ा. But मैं भी generally move कर रहा हूँ to, for example, like this shirt that you made, right? ये एक shirt है. Now I have this in my wardrobe. फिर और बहुत सारे दोस्त बनाते हैं कपड़े तो मैं उनके ले लेता हूँ. देन आई गो एंड स्पेसिफिकली, जो ऐसे नहीं स्टोर होता 11 से 7 खुले होते हैं, बट एक ही स्टोर है दिल्ली के अंदर एंड इट्स अ स्पेसिफिक ब्रांड, वहाँ से जाके लेता हूँ. इवेंचुअली मेरा पूरा वार्डरोब इज गेटिंग जैसे डी आइकियाफाइंग होता है, ऐसे H&M ज़ाराफाइंग वो ख़त्म होता जा रहा है. बिकॉज आई सी, एटलीस्ट फॉर मी, आई सी नो मेरिट. मैं सेम प्राइस में बेटर कपड़े खरीद पा रहा हूँ इन लोकल 1 or 2 मॉम एंड पॉप ब्रांड से इंडिया के, जो पहले नहीं था. अगर तू पहले मॉम एंड पॉप ब्रांड्स से कुछ खरीदने की कोशिश करता था तो तेरे को लगता था क्वालिटी अच्छी नहीं है और स्टेटस भी नहीं मिल रहा है उससे. ये प्रॉब्लम होती थी एज अ क्लोथिंग कंज्यूमर. बिल्कुल द ब्रांड वैल्यू says a lot, and now that same brand value, as you said, and I'm in that same boat, is ki I don't want to wear anything big branded. Like, it has nothing to do with me. It doesn't represent any part of me, any story about me. I feel zero connection to a Zara or an H&M, or as a matter of fact, like even the more expensive brand like Armani, I have no connection. Nahin, and like how does Armani like have anything to do with me? So I don't feel good wearing it, and that switch only comes after you start representing stuff and wearing stuff that is closer to you, right? For example, how my journey started was, let's say, with mushrooms. I mean, I love mushrooms, and big believer in the powers of those beings and stuff. And I started looking for mushroom shirts, right? Mushroom clothes. And anywhere I would go,
mushrooms are this like psychedelic, hippie, trippy kind of vibe. So all the clothes I would find were like these neon shirts or, you know, like these big gowns covered in mushrooms, right? There was no like, I couldn't find a shirt that I could wear out to dinner that had a Everyday mushroom. clothing nahi thi. Wacky festival clothes, let's just say. Exactly. But still, I would buy those t-shirts, and every time I would wear it, I would feel good about wearing it, and it would be a great conversation starter as well. If like I'm going out in the world wearing a mushroom, so any mushroom lover or I guess mushroom hater, as a matter of that fact, it would be a great conversation starter भाई there. mushroom hater क्या बोलते हैं तेरे से? हुआ है तेरे साथ ऐसा? नहीं ऐसा नहीं हुआ, but मतलब like you do get right some people. जब मैं trippy shirts पहन के जा रहा हूँ, maybe like people who are not into mushrooms or psychedelic vibe, right? Let's say they would be like, okay, this guy is this hippie kind of hippie trippy psychedelic dude. So it's not like they would come to me and say it, but that shirt would be polarizing. I would feel it, right? Yeah. Like all the lovers would be attracted to it, all the haters would be a little repulsed to it. And I think जैसे when we were growing up in our teenage years, like तुझे याद है Ed Hardy पहनना? Ed Hardy was like a status symbol. Acquiring an Ed Hardy, and मुझे याद है उस टाइम पे Armani was too high priced. We couldn't even dream of buying it because 30-40 हज़ार की शर्ट होती थी. Then they came out with the affordable Armani Exchange and Armani jeans, right? Armani Exchange or Armani jeans, something like that. Armani Exchange. Armani Exchange, the more affordable, youthful option. And then there were always the Gucci's and the Burberry's जो बहुत कम लोग पहनते थे. आज भी बहुत सारे, अब तो बहुत सारे लोग पहनते हैं. Yeah. So like I remember wearing a lot of Tommy Hilfigers to start with. A lot of older people wore Lacostes, and I was a big Calvin Klein guy all the way till last year. Now my Calvin Klein अच्छी क्वालिटी की टी शर्ट है, बट मेरे मन में एक चीज़ हो गई यार, बहन जो मेरे को किसी और का नाम नहीं पहनना अपनी टी शर्ट पे ना. अब हो गया है बस कि यहाँ पे किसी और का नाम लिखा हुआ है. लाइक दिस इज़ अ होल मूवमेंट दैट आई बीन नोटिसिंग. मैं कुछ फोरम्स पढ़ रहा था कि बहुत सारे लोग ना जिनको वाकई में क्लोथिंग से प्यार है, they're actually removing the labels of the brands that they buy because they just want to wear the cloth as opposed to advertise the brand that they're wearing. मतलब मैं पे भी करूँ 30,000 रुपए आपकी एडवर्टाइजमेंट करने के लिए. That's so fucking weird, right? Yeah. And I don't know your story. Like I don't know. Like, but the reality is most people are still in the brand zone. However, with trends, as you said, there is a movement towards this self-expression, right? Wearing stuff, repping stuff that you believe in, and that goes on a deeper level too, right? Like eating stuff, like more community eating. मतलब वही पूरा consumption वाला आ गया ना कि consume stuff that you feel closer to, and that means more to you, not just anything that the crowd is saying or doing or the trends are saying. So coming back to the like relating to this and coming back to the mushroom shirt journey is every time I would wear that shirt, I would feel so proud of representing what I believe in. Same with like Bitcoin, let's say, right? Like, or like something Indian, right? I had like a Taj Mahal kind of. So you were repping the mushrooms and you were buying the first few clothes, and then what? But then I felt this need ki I want to customize this a little bit more according to like my taste, right? Like I go to these nice parties and these rooftops and stuff. I don't want to be wearing like a standard mushroom t-shirt there. हाँ अरे मैं वो चाय डाल रहा हूँ. जब मेरे में कलर नहीं आया था तेरा वाला, तो मैं कलर लाने की कोशिश कर रहा हूँ. तेरा पता नहीं कलर कम आ रहा है तेरा. कलर क्यों नहीं आ रहा? I wonder why. क्योंकि like I had मेरी चाय अभी आधा कप बची हुई थी. ओह अच्छा, तभी. अच्छा, और इसमें स्टीप भी करना है ना? अभी तो लेके आए थे, वो थोड़ी देर और रखना है ना इसको. ठीक है. हाँ एनीवे, तो अपनी तू पार्टी लाइफस्टाइल के बारे में बता रहा था, कैसे तू बहुत ज़्यादा पार्टी करता है LA के अंदर और बेशुमार तरीके से हरकतें करता है, तो वो उसके बारे में और बता थोड़ा सा. ऐसा कुछ बात नहीं है. मैं बस ये कह रहा था खुल के बता यार तू. कि मैं किसी if I'm going to a nice dinner, I still want to represent my mushrooms, right? Like I don't want to wear तेरे बच्चे हैं ना मशरूम्स? तेरे बच्चे हैं ना? हम सब मशरूम्स के बच्चे हैं, पहली बात. ठीक है भाई. There are ancestors. They're the जय मशरूम. तू बुलवाता है ना लोगों से. मैंने सुना था तो साहिल को कह रहा था बोलने के लिए जय मशरूम. Like every time you put a sticker, put the mushroom sticker on, you know, anywhere. That's the mini ceremony, the ritual.
that you have to do. Because again, in that moment, you're aligning the power of mushrooms with something you're carrying, like your laptop or your bottle. और फिर उस moment में I'm still rapping, guys. Apple. मैं तो पूरा capitalist हूँ. मैं तो बिल्कुल देखो Apple. अभी कह रहे कि I don't like rapping like these big brands. अब ये तो कपड़ों में, अबे टेक्नोलॉजी में तो चलता है कपड़ों में. This goes deeper. उड़ा दो इसको, तोड़ देता हूँ लैपटॉप को. Guys, live camera breaking. Anyway. So coming back to my mushroom shirt. So I felt this. And then I was like, okay, let me create my own designs and let's go online and find some like I want to create like a custom mushroom shirt. But you had no experience in design or anything like that. I've always been a little on the creative side, right? Like this logo, I've designed many logos for pretty much all my ventures. I'm the logo designer. I've always, I edit drone videos. I mean, I'm good with Illustrator and After Effects and stuff. So I'm not a designer per se, but I like to have my creative side always, and I play with tools and stuff. So, I went online, and everywhere what I found was T-shirts, yeah, hoodies, yeah, sweatpants, like the standard cotton ones, so branded hoti hain, right? Like create 20 of these, right? Like minimum order quantity is 20 units. Low quality. Even high quality, let's say I pay more, it's still a round neck t-shirt or a hoodie or standard sweatpants. क्योंकि लोग typically like when they make like office merch or brand merch, यही करते हैं ना कि मतलब या तो लंबी sleeves वाली t-shirt, short sleeve t-shirt या फिर hoodie. Exactly. So it's not the most fashionable. It's not. And it's high quality stuff, but it's still like, again, if I wanted to go a level deeper and get like all natural fiber or natural fabric, there were no options. I couldn't find any options. And then I was lucky that my mom has a boutique here in Faridabad, and she does women's stuff only. Shout out to auntie. Yeah, for sure. She does women's stuff only, or just like gowns and shadi stuff and stuff. So I never really thought that, her team could make like a men's shirt. But then I just ran this idea through her, and I was like, Mom, मुझे ना एक button down चाहिए black और उस पे mushroom बनाना चाहिए, और ऐसे मतलब not like too trippy, but I want it to be classy, a bougie mushroom shirt. And then like we collaborated a little bit and went into a creative process, or like I could customize everything from like I want to see this, I don't want to see any of the buttons except the top button, and I want all the buttons to be black except the top white, and then I want my mushroom to be this specific arts with a little bit of leaves and with these silver and red beads, and then obviously customized to my fit. And then when this shirt was made, I was mind blown. I was like, okay, wait, like now this just shows me I can pretty much create anything I want for myself. Like, granted that I have this production house at my disposal here, and every time I wore that shirt, it would be a great conversation starter, because no one has seen like who wears a mushroom shirt to a fancy dinner, right? Or like a work event or a corporate event. But I could wear it because it wasn't this trippy kind of psychedelic whatever. It was a nice shirt with organic cotton, very fancy, but with a little bit of a subtle mushroom touch. And मैंने देखा तो काफी सारी parties के अंदर भी वो पहन के आता है with like a suit on top or something like that, and it doesn't look like अरे कौन hippie आ गया है. It is very subtle, I will say that. It's subtle signal. Like I wore that mushroom shirt to a shadi, right, under a suit. And then, like, if I'm talking to someone and the conversation's going in one place, I'm like, by the way, check this out, and they're like, mind blown there. So that shirt in itself brought me so many connections and so many conversations. So it wasn't just about, hey, the shirt looking good. Then I started realizing, hey, like, I'm wearing stuff that I can talk about, I can believe in. It's part of my identity. It's part of my brand. Yeah. And that is such a great feeling of pride in myself, of wearing something that I created, wearing something that's good fabric. I can talk about the fabric story, and then I can also talk about my mushroom journey. And that shirt becomes like a resume, like a portfolio, walking portfolio. And that's when this was like the birth of kind of the idea behind Morni. And I was like, okay, I'm fortunate to be able to do this and create something super specific to me. And in India, I would say
the access to production is there, right? Like a lot of people do get custom stuff, they get fabric and they get stitched. But in the West, in the US, there is absolutely minimal. Like when you think of bespoke, when you think of custom, you think of suits, right? Maybe a standard button down. Yeah, typically custom suits बनवाते हैं लोग, or they make वही custom gowns, hoodies. like bridal wear, right? Like if you're going to a wedding, you do that. But in your day to day, even for like party wear and stuff, you never really, you don't have that access at all. Usually people put outfits together that they've accumulated after a while. और जो बहुत ऐसे, I mean, मैं तो बिल्कुल भी fashion centric नहीं था अभी तक. तो टिपिकली बंदे ऐसे करते हैं कि ब्रो हैव टू प्लेन वाइट टी शर्ट्स, वन ब्लैक टी शर्ट, ऐसे 3-4 चीज़ों के वो बेसिक्स की वो बना लेते हैं, उसी को ऊपर नीचे करके चलते रहते हैं. बट नो वन थिंक्स अबाउट हाउ यू कैन यूज़ योर क्लोथ्स टू टेल योर स्टोरी. इट्स ऑलवेज अबाउट oh look he's wearing a Balenciaga, if that's a thing, right? Or वो कोई और brand पहन रहा है. And I think it's the dawn of new conscious clothes choices. अभी तो बहुत unconsciously जो सामने आता है, जो अच्छा लगता है देखने में ले लेते हैं. But I would all like I've seen this in CEOs, right? CEOs अपने brand की वो पहनते हैं कि हमारा ये scene है, but they go with T-shirts. Yeah. If an everyday person can wear something that they enjoy, like symbols that they enjoy, that'll be pretty nice. Actually, मैंने बहुत पहले I used to wear a lot of custom shirts. दिल्ली के अंदर South X में there's this place called Kesar Josh, and वहाँ जाके उन्होंने बोला अपने initials लिखवाना चाहते हो? मैंने अपने initials लिखवा लिए, just said VK, and I would just wear those shirts everywhere. It felt pretty cool. Yeah. I wasn't so aligned with it at that point because उस time मेरे को फिर भी craze था कि bro Zara वाला लेना है, ये सब लेना है. Zara had still opened up at that point. वो वाला ज़माना जब हम पतली jeans पहनते थे और नीचे loafers पहनते थे. Yeah. And VK still is like your initial, right? Like in that sense, you're representing yourself. But how about a word? Like one shirt I'm working on says breathe. You know, I love that word, breathe. Right? बहुत सारे लोग की mental health ठीक हो जाएगी. Hey, ऐसे देखा नहीं तूने वो reels, इसके अंदर reels में आता है कि hey, stop scrolling. Take a deep breath. मैं reels और ऐसे TikTok वगैरह देखता नहीं था, so I don't know. भाई मैं तो बहुत देखता हूँ यार. But like again, like a word you believe in that you say a lot, right? Like you can wear that, and again, you don't have to try. Then you're wearing it, and anyone who connects with it automatically will come to you, and it can be a great start to a conversation or a relationship. And even if not, at the end of the day, you are kind of feeling good about wearing that in yourself, regardless of what happens. हार्दिक लोग Burning Man के कपड़े कहाँ से लेके आते हैं? So Burning Man, I would say, was another push in this direction for me, in the Morni direction and customization. वो तो ठीक है, like your story is fine. I'm saying, where do people get their Burning Man? The Burning Man में, one of the big principles is decommodification, right? So means no branded stuff. You cannot wear any branded stuff, or even like the U-Haul trucks there, they like change the names of U-Haul and make it funny, right? Like asshole or something like that, right? And you cannot see brands there. Maybe you will see here and there people from iPhone है उसके हाथ में, वो क्या करेगा? Well, phone तो चलते नहीं पहली बात वहाँ पे, but लोग वो भी करते हैं यार, लोग उस पे भी कवर लाते हैं, GoPros पे उनके छुपा होता है, right? It's not like someone's gonna kick you out. Yeah. But one of the base principles is decommodification, and then another one is radical self-expression. That whatever you're feeling inside, not just self-expression, but radical. Radical means extreme. बोलना ही है, मेरे को गुस्सा आ रहा है तो बोल रहा हूँ मैं गुस्से में. Well, in your clothes, right? In your clothes, in maybe your character, like people are there, maybe like they're not like that in real lives, but they do play a certain character, right? Cosplay करते हैं? Totally. Not everyone. I mean, everyone, and they also say fuck your burn, which means like my burn's my burn, your burn's your burn. Like I don't care what role this Burning Man is playing in your life, I'm here for my burn. So you meet all sorts of characters. Maybe some people are cosplaying, right? They're playing a character. The first timers, they're just exploring. So you see a bunch of everything. But for clothes, because you cannot buy any branded stuff and you want to express yourself, people spend weeks and months on preparing their outfits. So a lot of thrift stores. And it's about sustainability and recycling. So there's a lot of thrift store stuff, right? Like upcycled material. So people will get stuff, get into their character, cut, chop stuff, and, create custom outfits for them. And what I did in my Burning Man is I wanted to represent the India Hardik and LA Hardik. So I hit up my mom and I was like, Mama, Burning Man जा रहा हूँ, तो मेरे को ना 2-3 तो mushroom gown type चाहिए. And then I want
it to be futuristic, but also desi. So I want some Oms and Trishuls and, you know, like Shivji and stuff, but in like Burning Man kind of. भाई तू तेरे को पता है तू बहुत ही अलग तरह का इंसान है. अब सब अलग तरीके के इंसान है bro. अच्छा ठीक है, बर्निंग मैन गया, फिर लाइक ये जो रूल्स थे बर्निंग मैन के, were you told about these rules beforehand? कोई सर्कुलर आता है क्या? Circular आता है when you get a tickets, right? It comes with a guidebook, and then also more likely than not, the first time you're going, you'll go with a camp because you can go by yourself, but then you'll be lost. You'll have to arrange for water, food, all of it yourself, which is I wouldn't recommend it because it's a super harsh environment. So it's better to go with a camp. And then once you're part of a camp, they have their own, like we have our weekly meetings, right? Monthly meetings, whatever they're going through. That's the Inca festival, है weekly monthly meeting. Bro, because we're constructing our own domes and campsites. So there's a whole level of planning, you know, like everything. We had to rent a truck from Utah, like 20 hours away, get an entire dome into that, plan that, hey, we have this certain square footage at Burning Man. This is our campsite. So we created all models and stuff that this is what's going to be in our campsite. This is all our tents. This is going to be our dome. This is going to be our kitchen. This is where our generator is going to be. This is where water is going to be. We bought a portable shower. This is where our shower is going to be. So it's a whole, because there's no setup there. There's no setup at Burning Man. Everyone goes and sets up their own little camp. And by camp, I don't mean just tents, but the whole structure. Ecosystem, khana, pina, rehne, sehne ka, including porta potties, everything. Porta potties, there's basic porta potties there, but showers you have to arrange for yourself. So it must cost a lot to arrange. Ticket के अलावा भी मतलब बहुत पैसे लगते होंगे ना to make all of this happen. Yeah, bro. I mean, Burning Man is definitely for they say it's for everyone, but it's for the privileged, you know. But you know, still the principles and what you're doing there. You feel good being there, but so tell me more about this camp that you were a part of. किसका camp था ये? How did you meet these people? Random assign हुआ? Like नहीं ऐसे assign है कोई school camp में नहीं जा रहे तू ना. मैं 5th A में जा रहा हूँ 5th A के बच्चों के साथ. Random assign नहीं होता. So I wasn't gonna go to Burning Man until the month before, but कब गया तू? January this year? नहीं August of last year. August of 2022. So I went with this camp called Kumaya, first time camp. ये भी मतलब super small, 17 people. Usually the camps are like 40-50 people. 17 people, सब 20 साल, मतलब 20 as in 20s, right? 25 plus, 25 to 32 was our age range. How did you find this camp? So, one of my friends in LA, she went to this school called Babson, and because I make this tea, I had a few users from that little community, like 5 of the camp founders. Basically, all the camp founders had tried my tea. So they had this idea. They wanted to set up this library at Burning Man. Like whatever is happening out there is all crazy. We want to provide a safe haven for people to come, sit, journal, meditate, chill out. So they created this like dome और अंदर उसमें Persian rugs और library और journaling कि हमने सारे prompts रख दिए और किताबें रख दी और they wanted to do a tea ceremony, right? And when this हर कैंप का अलग अलग सीन होता है. हाँ, ये तो हमारा छोटा कैंप है 17 लोगों का. themed होते हैं. हाँ themed होते हैं बहुत next level होते हैं. ये तो हमारा छोटा कैंप है first time, but there's a whole ashram, 9-story building. आश्रम बनाते हैं, मतलब क्रेजी चीज़ें होती हैं. पर वही लोग आके खुद बनाते हैं, कोई नहीं आ रहा है, कोई सब ट्रकों में ला के खुद बना रहे हैं, फिर डिस्ट्रॉय भी खुद करके ले जा रहे हैं. सो स्टार्ट टू फिनिश ऑल कम्युनिटी ड्रिवन. सो दिस कैंप कुमाया. और एक और चीज़ करनी होती है कैंप को कि तुम्हारा कैंप है तो तुम्हें 3 या 4 इवेंट्स करनी होंगी एट मिनिमम, विच इज़ गोना गो ऑन द बर्निंग मैन काइंड ऑफ इवेंट लाइब्रेरी, राइट? सो अगेन देयर इज नो लाइनअप, देयर इज नो डीजेस दैट बर्निंग मैन इज इनवाइटिंग. The camps invite the DJs or the camps to events. So one of the events that our camp was doing was a tea ceremony, a tea and journal. And when they thought of tea, they were like, okay, we know what tea guy. So one of them extended the invite to me and they were like, hey, help us with the tea ceremony. And I was like, okay, I mean, I'm not going to, initially I was like, because it wasn't like, hey, host this. They're like, hey, we're doing this tea ceremony, give us some feedback and advice. So I was like, okay, I don't know if I'm going to go, but here I'll be a part of the discussion.
And then I talk to them and I'm like, okay, so what kind of tea? What are you thinking? And they have no idea. And I'm like, okay, how about the music? Like what vibes? And again, like very early stages, right? It was very early stages. And then basically it turned down to that, hey, let me just host the tea ceremony and I'll take care of the ingredients, of all the vibes there. I'll set the vibe, and I'll start with a little meditation, pranayam karaya unko thoda. कितने लोगों को कराया प्राणायाम? There was like 30-35 people, क्योंकि मेरे दोस्त भी थे वहाँ पे जो आए, रैंडम लोग ऑल्सो आए. और फिर हाँ, ये like that was my invite to Burning Man, and like thanks to them they brought down my camp fees a little bit as well, and because I was helping them with this event. और फिर that was my in to Burning Man. और I went in with low expectations. मैंने कहा नया कैंप है, ये सारे 25-26 साल के बच्चे हैं, क्या कैंप रहेंगे इतने बड़े. मैं नर्वस था, मैंने कहा मैं इतना कूल नहीं होऊंगा इनके लेम कैंप के साथ होऊंगा. मैं तो बहुत बड़ा कूल हार्दिक हूँ यार, मैं तो चाय वाय बनाता हूँ. मैं थोड़ी आसपास वाले इतने ऐसे स्टाइलिश एलए के लोग जा रहे हैं बड़े बड़े कैंप्स में, आश्रम 9 स्टोरी ये वो. आश्रम 9 स्टोरी है क्या ये बेंचो? मैं गया भी नहीं वहाँ पे, पर मतलब मुझे नहीं पता, बट है कुछ बहुत बड़ा कैंप है, जाना वाना बर्निंग. और किस तरह के कैंप देखे तूने? तो और कैंप पे तो गया होगा? हाँ, बहुत सारे कैंप्स होते हैं. मतलब एक होता है ऑर्जी कैंप. हाँ, वहाँ ऑर्जी चल रही होती है. हाँ, लाइव तू देख सकता है, तुम दे सकते हो, पार्टिसिपेट कर सकते हो. लोग देख रहे हैं किसी और की ऑर्जी को, मतलब तुम अंदर जाके देख सकते हो. ऐसे नहीं कि खुले में वो लाइन है, अंदर जाओ और फिर वहाँ पर तुम मतलब अपने पार्टनर के साथ जाओ. हाँ, सिंगल याद नहीं है मुझे, जा सकते थे नहीं, बट एक पार्टनर के साथ जाओ और अंदर जाके कंसेंशुअल है सब, कि मतलब आसपास लोग कर रहे हैं, तुम भी करो, किसी और के साथ करना है पूछो उससे कि करना है तुम्हें. हाँ. What? तो फिर तू गया ऑर्जी वाले कैंप में? हाँ, I went for a bit. I didn't really do anything. हाँ. Did you go alone? नहीं, you can't go alone. Right. So you got this chick and you went with her and one of my friends, हाँ, जैसे कि देख लेते हैं, चल जाए कुछ करना नहीं है कि let's check it out. फिर क्या लोग कर रहे थे, मतलब सीन वहाँ पे? हाँ, लोग कर रहे थे, and like depends on what time of the day you go, what day, right? It's open 24/7. There is no lineup, nothing like that. Like all camps, everything is 24/7 open. बात बता, like do people not click pictures when people are having sex, like or no, phones are not allowed inside. Okay, inside any camp? Well, not any camp, like some camps are open, right? तो वहाँ पर चल रहे होते हैं, but हाँ, ऐसे लोग होते नहीं ज़्यादा वहाँ पे कि ओह लोग सेक्स कर रहे हैं, फोटो खींच रहे हैं, बिहानी paparazzi, yeah. But in this whole orgy camp, मतलब who organizes this? One of the like this Kumaya camp, they had an idea for a Persian style tea room and dome and whatever. Some group had an idea of let's head an orgy camp, Man, shoot. Bhai soch. What a weird. What are the camps? And then there's camps, right? Like there's camps on health, wellness. There's a big pyramid where they have all meditations and stuff. So there's like all renowned artists and wellness people that are there hosting camps. Artists को भी पैसे नहीं मिलते ना, खुद आते हैं ना वो. हाँ, कोई पैसे नहीं लेता भाई. कैंप अपने बड़े बड़े डीजे होते हैं, उनके भी दोस्त हैं अपना, बड़े आए, उनको कैंप फ्री मिल जाता होगा, राइट? कैंप फ्री मिल गया. Bro, एसिड पाउली आ जाए भाई, जो भी एसिड पाउली, right? Like he was there. मतलब सारे बड़े बड़े ऐसे. And even on the stages, there is no backstage, there's no VIP and stuff, right? Like the stages are all on cars. क्योंकि there is like, how would you set a stage in the desert? Yeah. So it's big cars, जैसे वो Mad Max type नहीं होते? हाँ. ऐसे मतलब ट्रांसफॉर्मर टाइप मतलब होते हैं, बड़े बड़े ड्रैगन या जो भी बना हुआ है, एक ना चांद बना हुआ था, और उस पर डीजे चढ़ते हैं और अपना बजाते घूमते रहते हैं, और कभी कभी रुकती है वहाँ पे, लोग इकट्ठे हो जाते हैं और फिर चले जाते हैं. भाई एट वन पॉइंट बर्निंग मैन में कितनी पार्टीज चल रही है, मतलब ऐसा लाइक कितनी बार सेक्स चल रहे होते हैं नॉन स्टॉप? कैन यू फाइंड पीस देयर इफ यू वांट, लाइक कुछ Yeah, absolutely. Like sunrise time, you can go, और मतलब वो ना, it's like 60-70 kilometers बड़ा. तो और सब साइकिल पे होते हैं, पैदल नहीं चल रहा कोई, क्योंकि इतना बड़ा है. सब साइकिल लेके आते हैं, सब साइकिल लेके आनी होती है, साइकिल लेके आनी होती है, वरना तुम like you're not mobile, you can't really go anywhere. Yeah. तो शांति है. जैसे हमारे कैंप में, like our camp, हमने AC लगवाया था. Like it was an AC in the desert. आके लोग लेटे हुए हैं, अपना जर्नल कर रहे हैं, शांति चल रही है. हापे था हमें बस वहाँ पे, गुलाब जल था, जो आ रहे, मैं चंदन का टीका लगा रहा हूँ सबको, और गुलाब जल है. गोरों को इंडिया बट गोरों के भाई चंदन का टीका सब बॉडी कूल डाउन करता है. इट्स अ फकिंग फैक्ट, देयर इज नो इंडिया. आई नो भाई, मतलब मेरे को वो बढ़िया लग रहा है. मैंने कहा एटलीस्ट यू आर रैपिंग, दैट्स प्रीटी कूल. तो फिर उस कैंप के अंदर खाना वाने कैसे करते थे?
खाना सब लाए थे हमारे कैंप में। एक बढ़िया इटालियन शेफ थी, क्या बढ़िया खाना बनाया उसने हर टाइम। मतलब तुम इंग्रेडिएंट्स लेके आते हो? इंग्रेडिएंट्स से कहते हैं कैंप की वही प्लानिंग चल रही है ना, कैंप मीटिंग्स में लाइक वी नीड दिस, इट्स ऑल कवर्ड इन कैंप फीस। बट देन there's also food events, like some camps offer, and what we did too, we did disco pancakes. तो बेसिकली थर्सडे को लगाया अपना सामान बाहर ऐसे ग्रिल सी। इसको पैनकेक्स, वो मैरिजुआना पैनकेक्स होते हैं? नहीं, डिस्को पैनकेक्स, सुनो डिस्को म्यूजिक चल रहा है पीछे, हमने डीजे बुलाया डिस्को वाला। और पैनकेक, और पैनकेक वो है कि लोग आओ, तुम बताओ तुम्हें किस टाइप का पैनकेक चाहिए, तुम्हारी शक्ल बनाएंगे या मैंने मशरूम बनवाया ऑब्वियसली। इतनी बकचोदी मशरूम बनवाया ऑब्वियसली। और मतलब कोई कुछ बनवा रहा है, कोई अपनी साइकिल बनवा रहे हो, ऐसे नशे में लोग ऐसे गंदे गंदे पैनकेक्स। मेरी मतलब पैनकेक्स वर टेस्टी, बट लाइक द आर्ट वाजंट, वी डिडंट हैव आर्टिस्ट्स एंड स्टफ, इट्स जस्ट पीपल डू इट। और इंस्टॉलेशंस कैसी कैसी थी? व्हाट काइंड ऑफ इंस्टॉलेशंस? हर साल एक थीम होता है ना बर्निंग मैन का। या दिस वन वाज वेकिंग ड्रीम्स, which was pretty मतलब generic. क्या मतलब है? Generic as in like pretty vague in terms of what, but it was pretty dreamy, I would say. क्या उसके अंदर था क्या? Like मेरी favorite installation was this 360 sphere kind of dome. मतलब बहुत बड़ा है, उसके बीच में नेट लगा हुआ है, बिल्कुल बीच में, और वहाँ जाके लोग लेट सकते हैं। और उस डोम पे लगे हुए हैं like 300 something speakers, right? तो पूरा surround sound, literally surround sound, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट। भाई इन द मिडल ऑफ अ डेजर्ट कितनी गाड़ियाँ गई हैं, 300 स्पीकर लगा रखे हैं वहाँ पे। हाँ 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 हाँ। और उस पर बजा रहे हैं नॉन स्टॉप ऐसे पिंक फ्लोइड की सारी एल्बम्स। तो मतलब जाके लेटो, डोम में ऐसे चल रहा है, और रात को लाइटें चल जाती है डोम में ऐसे, मतलब पूरा हो रहा होता है। और वो मेरा that was my favorite, I would say, art installation. And there is so many, bro. एक था, there was like 8 structures and pillars, और उसके बीच में ऐसे bridges थे, और उस pillars में जाओगे ना और अंदर जाओ, ऐसे जैसे मिनिएचर दुनिया नहीं होती जैसे बच्चों की दुनिया, बट लिटरली दुनिया बनी हुई है। उसमें से शॉपिंग मॉल है, मैक्रोन शॉप है, ये वो, और एक एक टावर में से दुनिया, फिर ऐसे उससे बाहर निकलो और मतलब आई मीन यू गेट इनटू लाइक द रियल बर्निंग मैन काइंड ऑफ स्टफ। तो लाइक डिड यू कवर द एंटायर फेस्टिवल और कुड यू नॉट? नो ब्रो, प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। शायद मैंने हाँ एरिया कर लिया होगा शायद, like I mean did all the big areas, but like there are so many camps, so much going on, so it's hard. I mean even if you go like more, and कोई ऐसे अलर्ट नहीं आ रही थी यहाँ पे ये हो रहा है, ये हो रहा है, it's all discovery। इंटरनेट ही नहीं है, सब कुछ डिस्कवरी है, नो सर्विस। हाँ, अगर पता लग गया कि भाई वहाँ पे फलाना डीजे बजा रहा है तो ठीक है, अदरवाइज बट बात ये कि देख कि जैसे अब तुम दोस्तों से बिछड़ रहे हो, राइट, यूर लाइक हाँ हम उस जगह मिलेंगे, उस डीजे के वो बड़ी आर्ट कार पे, पर वो साला खुद ही कार है, वो खुद चल रही है, तो मतलब तो उसकी खुद ही फिक्स्ड पोजीशन नहीं है, तो वो खुद ही मतलब मोबाइल है, राइट। तो तुम घूम गए तो घूम गए, जाके कैंप में मिलना कल। समझ रहे हो कि मतलब हाँ, तो अपनी एक दुनिया है। And you, what does it feel like? Were you with friends all 10 days, or were you by yourself as well for extended periods of time? I was by myself a little bit. I definitely had a Burning Man buddy who, like, her and I were exploring ourselves for a lot of the part. और फिर यार ऐसे क्या हंसी आ रही तो हंसूंगा। हाँ, anyway. बट कैंप जैसे डेली कैंप डिनर होते हैं, खाना तो खाना है, खाना खाने के लिए कैंप पे जाना होगा, और कैंप इवेंट्स पे साथ रहो। और मतलब मेरे को तो इतने लोग वहाँ मिल गए थे, क्योंकि LA तो पूरा बर्निंग मैन में पड़ा होता है, राइट। और वहाँ पे मेरे मंत्रा वाले दोस्त थे, मतलब इधर उधर उनके सर्कल में, तो इट वाज ऑल लाइक फ्लोई, लाइक न्यू कनेक्शंस, ओल्ड कनेक्शंस। You can't exchange Instagrams, you can't be like let's see, because everyone's on their own trip at that point. हाँ, कुछ लोगों से ऐसे कनेक्ट, लोग ओडी करते हैं वहाँ पे। आई थिंक करते होंगे, हीट स्ट्रोक लगते हैं भाई, क्योंकि हार्श कंडीशन में भी हो, सैंडस्टॉर्म आ रही हैं, अभी तो ये पार्टी चल रही है, फिर साला तूफान आ गया, फिर सबने अपने कैंप में ऐसे घुसे हुए हैं। मैं एक तो कैंप में मैं फंस, हाँ, सैंडस्टॉर्म्स आ रही होती है, बीटी हो रही होती है, तो मतलब हर चीज़ होती है वहाँ पे। पर बढ़िया है, आई मीन इट्स हार्श, राइट, इट्स 10 days, लाइक इट्स हैवी ऑन द पॉकेट एंड इट्स हैवी ऑन द बॉडी। तो ऐसा नहीं है कि मेरा भी मन है कि हर साल जाऊँगा। दिस ईयर माई गोल इज़, if I have, let's say, 20-30 people wearing my custom outfits at Burning Man, I'll go then. Makes sense. You know, like similar to last year, I had an intention of going. Like microflow was a big part of me being there. This year, I want Morni and microflow to be a part. Again, like if I'm able to contribute and add enough value to that community, then I'll go. If not, ऐसे वरना तो party करके आ जाओ. तो जो when you talked about radical self-expression,
Were you following that at Burning Man? फुल ब्रो, हम तो लोग कहते तुम पहली बार आए हो, हम तो मतलब फुल. आई मीन ऑल्सो लाइक माई आउटफिट्स वर आउट देयर, आई मीन एवरीवन्स आउटफिट्स आउट देयर, बट आई थिंक क्योंकि मेरा उसमें इंडियन टच था और मैंने अपना बनाया था, तो आई वॉज अगेन कि जो मेरा सेल्फ एक्सप्रेशन आ रहा था वो था. फिर मैंने माइक्रोफोन की टी सेरेमनी पहली बार, लाइक आई हेल्ड स्पेस विच definitely boosted my दोस्तों के लिए करता है typically, तो you do it for like smaller batches people. smaller, yeah, exactly. But इसमें भी ठीक है, I knew most people, but it was a more proper setting, right? और फिर मैं अपनी माला वाला पहन के भी बैठा हुआ था. Again, you're in a mode there, right? You're in your character, and वहाँ पे वही समझ आता है कि जब तुम build कर रहे हो और sandstorm आ रही है, तुम survival mode में चले जाते हो. जैसे हम ये cold plunge की बात कर रहे थे, right? कि इतना real हो जाता है, फिर वो दुनिया की बातें ना कम हो जाती खत्म हो जाती है, कुछ है ही नहीं भाई. फिर तुम सब अपने फ्लो में, सब अपने सब, फिर तुम्हारा भी वो अंदर का बाहर आना उभरना शुरू हो जाता है. तो फिर सभी उस कैरेक्टर, मेरे को याद है मैं एक बार ऐसे साइकिल चला रहा था और मतलब मैं देख रहा हूँ ऐसे सनराइज हो रहा है और इतने सारे ऐसे दूर तक ऐसे साइकिल पे चलते लोग दिख रहे हैं ऐसे अजीब कपड़ों में. मैंने कहा यार ये मैं कहाँ प्लेग्राउंड किस दुनिया में आ गया हो जहाँ पे सब अपना मस्ती में झूम रहे हैं अपने अजीब साइकिल चलाते हुए. कोई बहन घोड़ा बना हुआ है, कोई रैबिट बना हुआ है, क्या. फिर लोग फोटो कैसे डाल देते हैं इंस्टाग्राम पे बर्निंग मैन की? अपना फोटो अपना गोप्रो या फ़ोन तो ले ही जाते हैं, सर्विस नहीं होती वहाँ पे, पर फ़ोन का कैमरा तो फ़ोन का कैमरा है. एंड देन देयर इज ऑल्सो लाइक द इंस्टाग्राम लवर्स, राइट? वो अपनी आरवीज लाते हैं सैटेलाइट के साथ. इट्स नॉट लाइक देयर इज नो कनेक्टिविटी हियर. वो लाइव करते हैं बर्निंग मैन, वो हो गया, इट्स कंटामिनेटेड टू दैट लेवल नाउ. एब्सोल्युटली ब्रो, एब्सोल्युटली. तो कंटामिनेट तो इंस्टाग्राम पे नहीं दिखता हर जगह, वो कैसे पहुँचते हैं मतलब. हमारा थॉट वो बाद में डालते होंगे. बाद में भी डालते हैं, कई लोग खुद भी डालते हैं. आई मीन इट्स 80,000 पीपल, सो यूल फाइंड जैसे इंडिया में कितने लोग हैं, हर तरीके का हर कुछ हो रहा होता है, वैसे ही वहाँ पे भी मतलब माइक्रोकॉज़म ऐसे ही है कि हर तरीके का सब कुछ हो रहा है. So you'll find newbies, you'll find the Instagram kind of Insta hoes, you'll find like true burners. Burning Man उनकी इतनी आइडेंटिटी का पार्ट बन चुकी है, वो अपना बाहर दुनिया में जाके कहते हैं कि मैं बर्नर हूँ, मतलब हाँ ऐसा होता ही है कि इतने सारे बर्निंग मैन ग्रुप्स होते हैं कि ओहो तुम बर्नर हो, मैं भी बर्नर हूँ. What the fuck? स्टोनर वाली बात है तो bro, आप भी स्टोनर हो bro. I mean it makes sense to some level कि ठीक है, there's a bonding part to it, but there's also like that identity attachment ki this is the coolest thing I've done and this is so cool, like oh you've done it too, now we're friends. I mean, is it really the coolest thing you've ever done? I mean people think that. No, but in your life where would you place it? Coolest thing I've ever done, I don't know, but the most mind-blowing event and the most mind-blowing like festival कम्युनिटी, क्या बोलूँगा उसको, जो भी है मतलब कि गैदरिंग. फटी नहीं 10 दिन, अब तो बहन क्या कर रहा है 10 दिन? नहीं यार मेरे को तो बहुत ही मज़ा है. लोग कह रहे हैं ये फट गया, और फिर मैं लोगों से आके पूछ रहा हूँ जो 3 बार बर्निंग में लगती है, दिस वॉज माई हार्डेस्ट बर्न, कि सैंडस्टॉर्म आए ये वो. मैंने कहा मैं तो सैंडस्टॉर्म में मस्ती में साइकिल चला के झूम रहा हूँ, वीडियो ले रहा हूँ, मतलब मेरे को तो ऐसे बहुत मज़ा आया. देयर वॉज हार्ड पार्ट्स आई वुड से. लाइक व्हाट? कि मतलब यार पहले 2-3 दिन क्योंकि मेरे कोई क्लोज दोस्त नहीं गए थे मेरे साथ, राइट? कि ये दिस वॉज अ कैम्प दैट हैड इन्वाइटेड मी. And then, like, I had this lover here who was with her camp there. Like, we had a meeting. I mean, like, something had happened, and I was like, shit, Hardik, मतलब तू इतना lonely feel कर रहा है यहाँ पे, तू मतलब क्या करेगा, ये वो तेरी अभी 30 सेरेमनी वाले तूने वो भी नहीं किया, तेरी अभी से फट रही है और मतलब यहाँ पे इतना गंदा बाल ऐसे गंदे हो रहे हैं. फिर मतलब जब तुम गंदे मोड में आ जाते हो ना, फिर सब गंदी आए हाय अब मैं पोर्टे पार्टी जाऊँगा, यहाँ पे तो इतनी टट्टी की गंदी मतलब आ रही है, इतने पैसे दे के मैं सारा टट्टी की भी सुनना है. तो मतलब कि वही जब तुम नेगेटिव एनर्जी में चले जाते हो ना, फिर सब नेगेटिव. सही है bro. Once you go down that route, everything feels bad. और वही कि वहाँ पे इतनी रियल सेंसेशन हो जाती है कि तुम नेगेटिव में जाओगे और नेगेटिव जाओगे, फिर अगले दिन नोटे फ्लिप हो गया और फिर तुम पॉजिटिव वाइब में चले गए, वाह 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 कितना मज़ा आ रहा है. तो the first couple days were hard, but then I was in full flow, bro. I was going hard, you know. I was like, और फिर मेरे को किसी ने बताया कि you want to see sunrise and sunsets there. You want to optimize for those 2 things. तो फिर मैंने स्लीप स्केड्यूल ऐसे ही बनाया कि मतलब 8 डिनर के बाद सो जाता था मैं, 8-9 बजे सो. तू रात भर पार्टी नहीं करता था? नहीं, दिन में 9 बजे सो जाओ, 3 बजे उठो, 6 घंटे हो गए, 6-7 घंटे, 3 बजे उठ रहे हो, लोग अपना डीप पार्टी चल रहे हैं. हाँ. और तब तुम्हारी पार्टी शुरू हो रही है और मैं साइकिल चला के जा रहा हूँ अपना 1-2 घंटे पार्टी पे, 1-2 घंटा अपना पार्टी की, और फिर एंड में चले गए. सनराइज हो रहा है, अमेजिंग सनराइज,
बट अब सनराइज का मतलब ये नहीं कि पार्टी खत्म, अभी तो तुम्हारा दिन शुरू हुआ है. तो फिर और भी फिर डे टाइम इवेंट्स चल रहे हैं, मेडिटेशन हो गई, योगा सेशन चले गए, है ना. और फिर 10-11 बजे तक जब धूप ज़्यादा गर्मी होने लगे तब ठीक है कैंप में जाओ, अपना एसी में लेटो, अपना लंच वंच करो, नैप करो 12 से 2-3-4 बजे तक, फिर सनसेट होने वाला है, फिर निकल जाओ साइकिल पे. लोगों की गांड पड़ती है तो वो रीडिंग वीडिंग करते हैं या फिर चुप चुप अकेले अकेले रहते हैं वहाँ पे? हाँ, ऐसे थे मेरे कैंप में तो नहीं, आसपास बहुत होते हैं भाई. लोगों की फट जाती है भाई, क्योंकि 10 दिन है, मतलब सारा डस्टी माहौल है, गंदा हो रहा है, और लोग पागल हो रहे हैं आसपास. लाइक पीपल आर जस्ट रेडिकली सेल्फ एक्सप्रेसिंग एंड दे कांट नहीं ऐसा नहीं कि सब पागल होकर घूम रहे हैं, मतलब. और देखिए सब हेल्पफुल, बहुत हेल्पफुल होते हैं कि मतलब एक बार तुम वहाँ पहुँच गए. और एक और बात है कि वहाँ पे कुछ खरीदना बेचना नहीं है. यू कैन नॉट बाय एनीथिंग, जस्ट गिव इट अवे. हाँ, You can give things away. Everything. You cannot. There is no dollar exchange other than you buy ice from the central organization, which is $5, right? बर्फ क्यों खरीदनी होती है भाई? रेगिस्तान में हो, गर्मी में, धूप में, बर्फ तो नहीं. बर्फ लगाओगे अपने ऊपर? नहीं यार, पानी के लिए, मतलब अपना फूड फ्रीज करने के लिए 10 दिन का खाना होता है, वो फ्रोजन रखना होता है अपना. मतलब उसके लिए बर्फ तो चाहिए ही. फ्रीजर थे ना. ओ डीप फ्रीजर लेके आते हो तुम? फ्रीजर थे ना अपने किचन में भाई. फ्रीजर भी ट्रक में डाल के. और हमारा ट्रक तो ऐसे चला था, यूटा से सोच चला, 15 मिनट चले, टायर फट गया. सोच ऐसे. मैं उसमें नहीं था, मैं तो एलए से आया था, मैं तो इजी क्रू में था जो मेन कैंप आ रहा था. 2 दिन ट्रक पैक करके अपना दम लगा के आयशा अपना सारे ग्रुप चैंट वैंट करके निकले. रात को निकले ताकि सुबह पहुंच जाए. 12 बजे निकले. 12-15 मिनट टायर फट गया. 15 मिनट चले, ट्रक का टायर ही फट गया भाई. मतलब क्योंकि ओवरलोडेड ट्रक. तो बोलो ऐसे होता रहता है, बट ठीक है, हिम्मत करके आएगा. सही है ब्रो, क्रेजी. आई थिंक इससे मेरा भी मन कर गया एटलीस्ट कि एक बार मैं ज़िंदगी में बर्निंग मैन ट्राई करूँ, देखते हैं क्या होता है. नहीं बिल्कुल जाने वाली जगह है, जाने लायक है. जैसे 10 दिन का विपासना होता है ना, वैसे ही 10 दिन का ये था. मतलब देयर इज नो कंपैरिजन, बट इन सम वेज देयर इज, क्योंकि यू आर इन अ मोड, यू आर इन अ जोन, सर्वाइवल मोड, की मोर प्रेजेंस एंड स्टफ. ऑब्वियसली देयर इज सब्सटेंसेस एंड स्टफ देयर, सो इट्स आई वोंट कंपेयर इट टू विपासना बाय एनी मींस, बट वही मेरे को समझ लगा कि एक 10-day ट्रिप इनटू अ डिफरेंट यूनिवर्स. एंड लाइक कई तुम एक टाइम पे थक जाते हो लोगों से बात करते करते देन यू वांट टू लाइक रिट्रीट इनटू योरसेल्फ. वही होता है ना, फक योर बर्न, कि मतलब तुम किसी से बात कर रहे हो, तुम थक गए, चले जाओ. हाँ, कोई कुछ नहीं कहेगा. मेरे को रोकना नहीं है कि भाई कोई कुछ नहीं कहेगा, कोई कुछ नहीं कहेगा. और तुम्हें भी ये सीखने मिलता है कि जैसे मेरे दोस्त होते कहते कि हम जा रहे हैं, फिर मेरे को एकदम लगता है कि नहीं ये अच्छा है, मेरे दोस्तों मत जाओ, आओ ये करते हैं ना गाइस, इवेंट बहुत बढ़िया है, डीजे में. फिर मेरे को समझ आने लगा कि भाई हार्दिक, तू भी थोड़ा सीख इस बारे में. तो ऐसे ही होते हैं वहाँ पे उस लोग. एंड देन मोर एक्सपीरियंस्ड यू आर, द मोर वाइब यू आर इन, लाइक. बट दैट्स सच अ गुड लेसन दैट यू कैन ब्रिंग टू अदर इवेंट्स. या और वही डीकमोडिफिकेशन, नो कॉमर्स, राइट, कि मतलब वो एक अलग फेस्टिवल चलता ही है वहाँ पे. कोई वीआईपी नहीं, बड़े बड़े डिप्लो बजा रहा है, रात दोपहर के 2 बजे मैंने देखा डिप्लो बजा रहा है, 10 लोग खड़े हैं. समझ रहे कि मतलब कोई लाइनअप तो होता नहीं है. स्टैंडर्ड लाइनअप्स होते हैं कुछ, बट मैं डीजे नशे में घूम रहे हैं, बस पे चढ़ गए, बजाना शुरू हो गए अपने पेन ड्राइव के साथ. मतलब क्रेजी भाई, क्रेजी. ये वाली बात काफ़ी अच्छी है कि फक योर बर्न. लाइक हम कई बार देखते हैं इवेंट्स के अंदर, अरे ब्रो यार तू कहाँ पे है, मैं यहाँ पे हूँ यार, आजा. वो सही लगता है बिकॉज यू वांट टू फील लाइक ओके आई एम पार्टिंग विद माय फ्रेंड्स. बट समटाइम्स इट्स लाइक ब्रो मैं कुछ और करने जा रहा हूँ, बाय. और हम लोग तो काफ़ी इजीली प्रैक्टिस कर सकते हैं. जैसे तू कहता उस दिन जब हम वहाँ गए थे सुमित रॉय के घर में, कहता मेरे को घर जाना है. हाँ तो चल कहता नहीं, इसको प्रेशर करो, इसको प्रेशर करो, इसको प्रेशर करो, समर इसको बोल. वो मेरी आदत है भाई, जब मैं अपने मजे में होता हूँ. लेकिन ऐसे जिस दिन हम लोग वहाँ गए थे, कहाँ गए थे, महरौली में. अरे भैंस, हम एक जगह पे नहीं गए थे, महरौली में, जहाँ ऊपर मशरूम देखने चला गया था तू. अच्छा फक योर बर्न. नहीं ये वो है, स्पॉन्सर्ड इवेंट है. ये कोई दोस्त नहीं है. इसमें तुम बताओ कि कैसे तुम स्ट्रेटेजिकली. नहीं कर देंगे. अबे यार भाई ज्यादा चाय पी लिया है, मेरे को बहुत अच्छी लग रही है चाय, मैं नॉन स्टॉप पिए जा रहा हूँ. अमेजिंग, राइट. ये पॉडकास्ट में बुला लोगों को बता रहा हूँ दोस्त कास्ट का होना चाहिए रिचुअल, कोल्ड प्लंज एंड चाय. तो लोग कहेंगे कि हमें पॉडकास्ट पे तो आना है, हमें रिचुअल करना है, इसलिए आना है पॉडकास्ट पर. सोच तू रीच आउट करने लगी लोगों को कि ये हे आई डू दिस होल थिंग बिफोर कमिंग टू. बट आई थिंक लोगों की फटती है कोल्ड प्लंज से. हाँ तभी तो, मतलब बहुत कम लोग होते हैं जो करना चाहते हैं. मैंने कोल्ड प्लंज की स्टोरीज डाली, 600 लोगों ने 400 लोगों ने रीच आउट करा, हमें करना है. लाइक ग्रेट. देन
barely anyone. क्योंकि ब्रो कोल्ड पंच का सबसे पहला स्टेप ये है कि ठंडे पानी से नहाना शुरू करो पहले तो. हाँ कोल्ड शावर लेना शुरू करो. कोल्ड शावर्स आर द बेस्ट कि मतलब वो डेली बेसिस पे लाइक wakes you up, gets you flowing, and then you take a cold plunge and it's not that hard. I was in a bad place in my life in Boston. Boston के एक तो मैं कहानी बता रहा हूँ नहीं हंस रहा है पहली मादर चोर. वैसे बोलता भाई कंपैशनेट बनो. भाई ठीक है नहीं बताओ अब नहीं बता. अब मैं गुड प्लेस में हूँ मैं इसमें रहूँगा. बताओ अब मैं अच्छी जगह पे आ गया हूँ ना. नहीं सॉरी बताओ. तो भाई जब बेसिकली क्या था यार मैं आई वाज गोइंग थ्रू अ बंच ऑफ लाइक इश्यूज अबाउट व्हाट टू डू इन लाइफ. मैं थर्ड ईयर में था कॉलेज के. तब मैंने वैसे कोल्ड शावर डिस्कस करे थे और सर्दियाँ चल रही थी उस टाइम पे. और बाहर का टेम्परेचर होता था -20 -5 -10. तेरे को पता ही है कि ईस्ट कोस्ट कितना ठंडा होता है. और भैन जो मैंने पहली बार डिस्कवर करा और मैंने ऐसे वो करा राइट पे उसके जो नोजल होता है. नोजल इस तरफ लेके मैं जिंदगी पहली बार भाई. और आई स्वेयर माई लाइफ उस दिन के बाद बदल गई थी. मैंने अपने फेवरेट गाने चलाए भाई. और did you read about it somewhere that it changes? No, I मैंने विम हॉफ की वीडियो देखी थी. Okay. I did the meditation first because मेरे को थोड़ा जुकाम हो रहा था. That got better. Then I was like यार मेरे को cold shower भी करना है. And then I never switched back to hot water ever again in my life until I came back to India. Last year मैंने थोड़ा बहुत सर्दियों में अब गर्म पानी करा क्या हो गया. यार सर्दियों में इंडिया की सर्दी अलग होती है. नहीं but that's generally the way to go. अभी इस सर्दी में भी मतलब mostly cold ही करा है. और ना जो हमें फील हुआ था ना कोल्ड प्लंज की बात. अभी भी हम उस स्टेट के अंदर ही हैं मोस्टली. हंसी मजाक कर रहे हैं सब कुछ कर रहे हैं. बट लाइक इवन फॉर यू आफ्टर मिनट नंबर लाइक 3 or 4 or 5 it just changes. पहले डिस्कम्फर्ट होता है. And the body starts feeling warm inside as long as you're breathing correctly and you're not freaking out and stuff. Yeah, it's important to not freak out. The first time I did a cold plunge was in Amsterdam. और एक बंदा है David Boot. Fucking amazing dude. और वो पहले मतलब फेस्टिवल्स वगैरह जाता था, पार्टी वार्टी फुल करता था. कोल्ड शावर वाला बंदा बन गया. उसने आइस प्लंज शुरू किया भाई. आज की डेट में मतलब sober as fuck, yes, exactly. No, like not even coffee, right? Nothing. Like parties hard still, like is in the same flow, and his only high is cold plunges, and he's a cold plunge instructor now. Or like it's become such an asset for him. क्योंकि वो जहाँ जाता है ना उसका अपना सेटअप है. Like he moved from Amsterdam to Ibiza. और Ibiza में all the big resorts and stuff, right? Like he brought it there, he started doing it there, started making a lot of money and making a lot of connections there. Now he moved to Tulum and all he needs is like now he doesn't even need it because now the resorts are making like all these fancy baths for him, and now he's just like a cold plunge kind of instructor, a breathwork guy. I invited him to the microflow breathwork session as well. He hosted one. And bro, I've done many breathwork sessions. But वो कराते हैं holotropic breathing. तूने किया holotropic? हाँ YouTube पे हम लोगों ने करा था ना एक बार holotropic breathwork. हाँ जो 40-45 मिनट्स का होता है. हाँ हमने 20 मिनट्स का करा था. लेट के? नहीं बैठ के करा था. अरे नहीं तुम वो नकली holotropic breathing कर रहे हो तुम. हमें तो बढ़िया लगा था. It was more बहुत अलग था. Wim Hof अलग है. Holotropic is I think more advanced in a lot of ways. Because holotropic, if you lay down and do it, it releases DMT. Right? It's the really? Yes, it's the natural way of releasing DMT, like with a combination of वो oxygen deplete करके फिर extra oxygen के मेरे को ज़्यादा science नहीं पता, but सीधा सर में लगता है और you have to do it for 40-45 minutes और boom फिर मतलब out of body experiences होते हैं सिर्फ और सिर्फ breath work से. So he did that and I had also done it before like 15-20 minutes, but bro he led like a 45-minute 50-minute thing and I was out of my body. मुझे लगा कि मैं ही ज़्यादा यहाँ पे ट्रिप कर रहा हूँ. फिर मैं उठा लोगों से पूछा मैंने लोग सब कहते कि भाई ये तो मतलब चले गए बाहर. हाँ सब लोग नहीं बट कुछ लोग मतलब बाकी सबको अच्छा लगा. बट so what happens क्योंकि यार even with the Osho dynamic जो 20 मिनट वाली होती है even that's hard to do क्योंकि थक जाती है नाक वगैरह है ना. दर्द होता है उसमें. हाँ लेकिन Wim Hof वगैरह भी हो जाती है बट 40 minutes of holotropic non-stop. नहीं non-stop नहीं ये होता है ना holotropic. हमने YouTube पे चलाया था बीट पे लो-फाई बीट पे चल रहा था वो ऐसा होता है कि करो फिर ब्रेक लो करो ब्रेक लो ऐसा टाइप होता है. I don't know what it was but I mean his was powerful. But anyway he does this cold water thing and he says like it's been the best solution to a lot of health problems, substance stuff, pretty much. I do feel cleaner. I don't want to do the things that I do
जब ऐसा मन करता है थोड़ा सा सेल्फ साबोटाज करते हैं, आज अपनी पुरानी हैबिट्स पे जाते हैं, या स्क्रॉल करते हैं, या नीडलेसली कोई सिगरेट पीते हैं, या कुछ भी करते हैं, लेट्स हैव अ ड्रिंक, यू नो, लाइक जो वो इंस्टिंक्ट होता है ना कि यू नो लेट्स जस्ट डू दैट काइंड ऑफ गोज अवे फॉर अ लॉन्ग टाइम. आई एम वंडरिंग ब्रो, व्हाट काइंड ऑफ ब्रेथ वर्क हैव यू एंजॉयड द मोस्ट इन योर लाइफ? अभी तूने बहुत सारे कर रखे हैं, तूने भी विपासना कर रखा है, 36 तरह की चीज़ें कर रखी हैं. विपासना तो ब्रेथ वर्क का हुआ. विपासना तो ऑब्जर्विंग, बहुत थोड़ा सा. I mean, Vipassana is observing breathing as it is, if you call that breath work. मुझे अपना स्टैंडर्ड प्राणायाम अच्छा लगता है कि मतलब नॉर्मल भस्त्रिका होल्ड करो और फिर होल्ड करो, है ना. अच्छा, एंड में भी होल्ड करना होता है. 4 स्क्वायर होता है ना, बॉक्स ब्रीदिंग. दिस इज बॉक्स ब्रीदिंग. इनहेल, होल्ड, एक्सहेल, होल्ड. 4 seconds. 7 8 सेकेंड वाले शुरू में 4 करो. बट फिर मेरे को जो मैं उज्जाई ब्रीदिंग जो बोलते हैं, जो थ्रोट से ब्रीदिंग, वो मैं तो बहुत करने लग गया हूँ. अभी मैं यहाँ पे भी कोल्ड प्लंज वगैरह था, वो अलग से आवाज़ आती है, थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए होती है उसके लिए. बट उससे इज इट बेटर? तूने मेरे को स्टोरी पे भी रिप्लाई करा था कि उज्जाई ब्रीदिंग करिए, क्योंकि आई वाज ब्रीदिंग बैडली इन द उससे ना हीट रेगुलेटेड रहती है अंदर से, और मतलब मुझे तो अच्छा भी लगता है. ऐसा लगता है कि ज़्यादा हवा आ रही है, मतलब वो है. फिर मुझे ब्राह्मी बहुत पसंद है. ब्रेथ वर्क नहीं हुआ. ब्राह्मी क्या होता है? ब्राह्मी में तुमने कान ऐसे बंद करते हो. अच्छा, और करते हो, ऐसे बेस बनता है. हाँ, ऐसा नानाजी कराते थे मेरे को. फिर आलोम विलोम, मतलब सब बढ़िया लगता है मेरे को. अपना देसी ब्रेथ वर्क सबसे अच्छा लगता है. मतलब चाहे जितने वहाँ पे क्या विजुअलाइजेशन ये नहीं सब ज़्यादा. आई थिंक प्रैक्टिकल है. हमारे को स्कूल वगैरह में भी अनुलोम विलोम तो कराते ही थे किसी न किसी लेवल पे. ओके, सो टेल मी अबाउट ऑल ऑफ दिस. ये तो सब हो गया, ठीक है. अब मैं पूछता हूँ, देखो ऐसे मोनी शर्ट पहन के कैसा लगता है? भाई मेरे को आज ऑनेस्टली बताऊं, हमने कोल्ड प्लंज करा, हमने टी पी, और मैंने कपड़े पहने. I don't remember the last time I wore white pants. I've had 3 or 4 white pants जो रखी हुई हैं. I didn't feel the best when I first wore it, क्योंकि ऐसा लगा यार कैसे के साथ पेयर करूँगा, कैसे पहनूंगा. But today I feel good because I wore the entire outfit. I'm a very टी-शर्ट पहनो, नीचे कोई भी जीन्स पहनो और चलो वाले बंदे, क्योंकि वाइब तो है ही, कपड़ों से क्या फर्क पड़ता है. पर आज I feel different. I don't know what मतलब it's not a psychedelic experience as such, but I do feel a lot more comfortable in my skin, if that makes sense. Because you're wearing hemp, bro. You're wearing. अरे बहन. Such में, I mean, I'm a true believer in that, and this too. Like I discovered this recently, Kala cotton. I think our skin is a heavily underrated organ in terms of consumption. We pay attention to what we're eating. We pay attention to obviously what we're smelling because we can't ignore it. Hearing. But we forget that our skin is our biggest organ. Even though it's a layer, it has receptors. It has millions of receptors. I mean, if you apply a cream, you can see, if you apply any cream to your skin, arthritis or and if you have joint problems, that heals it, right? So you know that the receptors work. Like not just excreting stuff, but taking it in. That's very interesting. Now, this is no spiritual woo-woo energy stuff. Now, it's common sense. Ki if you're wearing stuff, and also, for most of our living life, we're wearing something. We're not naked, right? That's 90-95%, maybe even higher. Like I don't know the percentage. So we pay little attention to what's touching our bodies the whole time, what we're covered in. Not just how it looks, but how it feels and where it comes from and what chemicals are on it. So on so forth. So for example, अगर मैं polyester पहनूंगा, I'm gonna feel different as opposed to this. Yes, I mean, now there's a placebo effect also. Now that I've planted this seed here, now you'll be like, oh, this is good or not. But overall, long term, this is like long term, right? Like consistently, what is touching your body on a moment to moment basis. Hemp में कपड़े, like, why did you decide to go with hemp? Hemp is like, it's used for medicinal stuff. I know लोग कपड़े बनाते हैं, but it's not really prevalent in India, is it? Bro, like the hemp. Before all the criminalization happened, the first Levi's jeans was made out of hemp. Really? The first Ford car, Ford की जो गाड़ी थी ना, Henry Ford, and you can look it up. This fact was made out of hemp. मतलब there was hemp buildings, there was hemp everything. Like hemp is and you can fact check this absolutely. First no Ford. No steel, no aluminum. Hemp. मतलब there was some metals in there, but a big chunk of the body was hemp. The hemp has been
I mean, and in Indian culture, right? कि जो है भांग की चटनी भी बनती है. सिर्फ हम आज की डेट में we associate hemp with cannabis, and it's not even cannabis. We associate with CBD, THC right away. But hemp is a plant, is also one of the very few plants where each of its part, everything from the stem to the flower to the seeds, has many purposes. This is the cannabis plant? Cannabis sativa is like the female part of it. Hemp is male. जो basically the THC, the bud we smoked, is sexually frustrated female cannabis plants, right? The more frustrated they are, the more juices they excrete, which is THC, and the more high you get, the more potent they are. Whoa. ये तेरे को पता होगी बात? नहीं, I had no idea. ये तेरे को नहीं पता बात? No. हाँ, तो cannabis की भी बहुत बढ़िया अपनी जर्नी है, क्योंकि cannabis there is indica and sativa, right? Kush वो तो मुझे पता है. Kush is all indica. Kush is all India. Sativa is वहाँ की वेस्ट की. और वो यही हो ना, सटीवा एक साइंटिस्ट था, मेरे को नाम याद नहीं है, वो ऐसे टेस्टिंग करा था एक फीमेल प्लांट को, उसने मेट नहीं करवाया, वो और पोटेंट अपना बर्ड निकालती गई और बन गया तुम्हारा कैनबिस सटीवा, मतलब पोटेंट, और फिर हाइब्रिड. Let's not talk about the specific strains. There's no point. Anyway, coming back to hemp, so it's not like I picked hemp right away. It picked you. Anyway. What I was looking for when I came to, even before I came to India, right? Back on that customization journey and having like a mushroom shirt where I started feeling proud and blah, blah. I was like, okay, what's the next step? Now, what is this shirt made out of, right? Like cotton. Okay, maybe I want to customize that as well. I want to explore different fabrics and see if I can produce something more natural, no dyes, right? Because at the end of the day, that black cotton shirt, I still don't know what dye was used in it, what chemicals were. The chemicals were still touching. उससे skin effect होती है. I mean, people around the world, billions of people wear it. Is it really that detrimental to the skin? It's not. I wouldn't say it's detrimental, but I would say on the flip side, if you wear stuff that's lighter and natural, it helps regulate the body better. I will say this. I feel like I'm almost naked wearing this shirt. And I'm not saying this because tu mera dost hai. I just feel lighter in this. I feel like I am, like if I touch the shirt, I can touch my chest. Right? There's no thickness nahi hai. वो थिकनेस नहीं है, और इट्स मोर ड्यूरेबल देन कॉटन. इट्स सो, जैसे मैं इसको फैक्ट्री पे ले गया कॉटन की अभी जोधपुर में, उन्होंने फाड़ा, उनको पता नहीं था क्या है. दे डिडंट नो दैट दिस इज हेम्प. कहते सर ये तो पॉलिएस्टर है. मैंने कहा क्यों पॉलिएस्टर क्यों है? कहते कॉटन को फाड़ो तो इतनी आसानी से फट जाता है, ये तो फट नहीं रहा, ये तो पॉलिएस्टर है. मैंने कहा नहीं जी, दिस इज नेचुरल हेम्प, मोर ड्यूरेबल, स्ट्रॉन्ग, क्योंकि इसकी रस्सियाँ भी बनती है ना. लाइक यू मेक रोप्स आउट ऑफ हेम्प, यू मेक स्ट्रक्चर्स आउट ऑफ इट. सो इट्स लाइटर, इट्स मोर ब्रीदेबल एंड इट्स स्ट्रॉन्गर. तो मतलब like why is it not common practice then? Kyuki it was in the 1900s 1800s, and then the criminalization happened, right? Even in India, if you see, like I was exploring the hemp scene, I went to Uttarakhand, explored the scene, and unfortunately like it's still very much tied to cannabis, and the social regulatory part around it is hard to navigate. But you can look at China, for like a lot of the hemp does come from China, and China has been heavily investing in sustainable hemp farming for a decade at this point. Really? Yes. Hemp, China is the biggest producer of hemp today. And it's crazy to think that, right? Like, and it's the biggest investor in solar and stuff too. Like, China's making the right moves in so many directions. But, and that's why I'm betting on this as well. Like, it's not here today, this fabric works. With time, the regulations are only going to get easier because the benefits are there, and this fabric is going to become more prevalent. But it's maybe costly to produce than linen, for example, right? Yeah, right now, because again, economics, right? Ki there is not the processing facilities, there is less supply, right? You have to import some yarn, you have to import some machines. So it's all an infrastructure reason that it's more expensive. But in reality, it takes 10% of the water that cotton uses. Hemp uses 10% of the water. And with cotton, you have to dispose the stem, you have to dispose the branches. Hemp, you use the seeds for hemp seeds, like jo smoothies mein dalo, right? Like it's medicinal. Then you can use the stems and fiber for extracting this fiber, because this is stem. Comes from that. Versus cotton. Cotton is like cotton roj ugti hai, right? So it's different. So it's actually way more profitable than cotton if grown at scale. So I think it's only a function of time that it's going to get
So are you just using hemp for all the clothes that we're making? No, hemp is one of them. This is kala cotton. This is Kala cotton. Kala cotton. जो सफेद है. यार उसको बोलते काला कॉटन इसलिए I don't know why they call it, but it's from Gujarat, from Kutch, specific Kutch region. It's all rain water fed. कि कोई इसमें वो नहीं होता, and it's super resilient क्योंकि कच्छ गुजरात is a desert. Yeah. साल में 2 दिन बारिश होती है और उसमें ही उग जाता है. Right? No chemicals, no pesticide. I mean, kala cotton is pretty trending these days anyway. Much lighter, much more airy. Obviously, this is like a little more kind of delicate, so you have to care for it a little more. ऐसे It's more फट सकता है. फट नहीं सकता, मतलब थोड़ा सॉफ्ट सा हो जाएगा, right? You have to care for it a little bit more, but I mean, like अच्छी चीज़ है तभी तो care कर रहे हो. And then I'm using so when I came back, I wanted to explore more fabrics, and then I started on this quest of where I discovered bamboo fabric, right? Bamboo or banana fiber. Right now I source banana fiber, south se aata hai. It's made out of banana leaves and banana stuff. It's like linen, super soft, super breathing. Fir aata eucalyptus fiber. That's another one, which is tencel. So why going to all these plants, bro? One, they use less resources. And two, as you can see, they feel lighter. They feel much better. But I'm saying, why I'm asking you, this is, you're going against traditional practices of making clothes, right? Which is what? Which is just typically जैसे cotton linen जिस factory में बनता होगा ऐसे करता होगा. हाँ. तो तू ये सब, I'm asking you, what's the reason for going down this route, like using bamboo or banana fiber or hemp? Number one reason I would say is on a personal level, is that it feels good. To me, it feels lighter, more airy, more breathable than cotton. Second, if you look at the cotton supply chain right now, guess कि एक standard cotton जो t-shirt है, उसको कितना पानी लगता होगा बनाने में from start to finish? 4-5 लीटर. 2,700 liters. 2,700 liters. क्या बात कर रहा है bro? For one cotton shirt. Standard cotton shirt. Shirt है t-shirt? T-shirt. एक normal 899 रुपए की जो basic से basic ले सकता है तू. From start to finish, from cultivation to processing to mills. एक t-shirt. 2700 liter. Cotton, I think cotton industry is 10% of global CO2 emissions. Entire global CO2 emissions is cotton industry. और भी बहुत सारे ऐसे हैं. 2700 लीटर एक टी-शर्ट के लिए. And no wonder you don't wear t-shirts anymore. कहाँ है लैपटॉप का, एक बार फैक्ट चेक करो. नहीं वो तो लोग बता देंगे अगर गलत है तो. नहीं सही है मतलब. So it's crazy, right? कि और ऐसा नहीं है कि मतलब I don't wear cotton t-shirts anymore. I still do. I mean, we're living in this world. I mean, there's no option. But कि वही कि और the third reason I picked these is because of part of Morni also is supply chain transparency. कि I want to be able to tell people कि you're wearing this shirt, right? I'm wearing this shirt. I can tell that one, I designed this. This is my like own kind of co-creation. 2, check out my logo or check out my mushroom, whatever I believe in. 3, look at this fabric. It's kala cotton, rainwater fed. I can tell where it comes from this specific region of Gujarat, which is known for this, blah, blah. So there is so many stories just tied to one shirt, right? On multiple levels here. So I feel much more connected to it. With cotton, with standard cotton, the supply chain is so intertwined that it's hard to trace back which cotton comes from where, because there's so many hands touching it, so many facilities it goes through, and it's heavily processed before it gets to retail. Is there a reason for a transparent supply chain? For example, I was reading this book called Living in a Flat World, और वो supply chains के ऊपर ही. I don't know if you know about it. I've heard of the book. I've never read it. हाँ, but it's about how कि एक कंपनी थी जिन्होंने रियलाइज करा कि टैग्स कहीं और लगते थे कपड़ों के, कपड़े कहीं और बनते थे बिकॉज मिसट्रस्ट था. तो उन्होंने एक काम सबको देना शुरू कर दिया एंड दे ओपन द सप्लाई चेन अप एंड सो दे कंट्रोल मोर ऑफ द मार्केट. वो कपड़ों वाला ही काम करते थे कुछ. बट यू थिंक द सप्लाई चेन फॉर कॉटन एंड लाइक जिस तरह का फास्ट फैशन इज दैट डैमेज्ड? Absolutely, bro. As I said, like इतना पानी कंज्यूम होता है, labor practices. I mean, it's just a big ass industry, which is hard to change if you go into it and try to fix it. I think the solution to it is create something and promote something
that is a simpler supply chain, lower processing, lower energy use, and that's my main intention of bringing these. Well, second, right? First is they feel good and they look good to begin with. पहले तो स्टार्ट बनना है, बाकी सब बातें बाद में. हाँ क्यों ठीक है इस मतलब ये होता कि oh this thing is super sustainable but it's shit like like this is fashion. हाँ यार बहुत one of the reasons I get turned off from all these sustainable fashion brands is they're not as good to look at sometimes. Exactly. So it's like number one, you're talking about fashion. You're not talking to a factory. You're talking to someone wearing it. It's got to look good and it's got to feel good. And then you talk about these things. So you know Morni का ये second pillar है कि know what you're consuming. First is be your own brand. कि BYOB guys. BYOB, exactly. Be your own brand. You know, represent what you're wearing. Like even invest. Put your money towards your community, and then be a representative. Yeah, if you work in the BJP or Congress, you know you can have custom. Exactly. Exactly. Cries. For second, and know what you're consuming. Ki even food. This goes beyond clothes, right? What you're consuming in terms of food, even energy, right? Like everything that you're coming in, like you should get more aware of it, and that's where the supply chain transparency comes place and all of that. And then the third pillar is ki it says don't just consume but prosume. So just say we can talk about that in terms of content as well. Ki we can just consume content or we can become a creator also and consume it. So then you're a prosumer, right? You're a producer and a consumer of the content. So similarly with clothes as well, with food as well, grow your food and eat your food. Clothes maybe make some clothes and then consume some clothes, and that is I think on a big level a key to sustainability, where everyone becomes a producer to society in some ways and adds value. So how can people do that? How can people say make their own clothes with you? कैसे कर सकते हैं ऐसा? Website पे जाओ, like Live? The website's live, or the goal with the website's What is it called? mymorni.com. My right? ठीक है हाँ. नाम भी तो थोड़ा मेरी morni. Because again it's your morni, right? Or and I'm not a fashion designer, so it's hard. I'm not trying to be a brand or a clothing line. The goal is to create a platform for people to share their visions and desires and what they have in their minds and make this clothing production accessible to everyone. The website where there's a form, you can't just buy a piece out of the bat. Like you can select in the form that you like a Morni piece and you want to make some customization to it. But in the form, you go through a series of questions like kaun sa fabric chahiye, kaun sa cut chahiye, where do you envision yourself wearing this piece, what's your intention behind this, what fit you want, and then we go through a process and create a custom outfit for you. Awesome. मैं तो बड़ा खुश हुई कपड़े पहन के. मैं भी खुश हूँ तूने कपड़े पहने हैं. अच्छा लग रहा है. नंगा बैठ जाता नहीं तो मैं. अच्छा लग रहा है वैसे देख के, मतलब ऐसे बोल खुल के बोल, मत कर, बोल. ऐसे टी शर्ट पहन के बैठे रहते हो थोड़ा, मतलब हाँ बिना नहाए धोए आया था मैं आज. मम्मा भी खुश होंगी ऐसे बेटा शर्ट पहन रहे, वेकअप सेट टाइप की, बेटा बड़ा हो गया. वाइट शर्ट. क्या लोलू मूवी थी ब्रो. इन हाइंडसाइट दैट मूवी इज सो बैड. 15 दिन ऑफिस आते को पोस्ट दे दूंगा भोसड़ी के. भाई हमारे कितने ऐसे दोस्त ऐसा होता है उनके साथ. मैं तो नहीं जानता किसी को जिसका ऐसा हुआ है. भाई हम फैक्ट्री वालों को जानते हैं, तुम कैसी बात कर रहे हो, उनको बिना फैक्ट्री जाए पोस्ट हो जाते हैं. हम तो ऐसी मशरूमों वालों के साथ, कंटेंट वालों के साथ ही घूमते हैं जो थोड़े इजोटेरिक लाइफस्टाइल प्रमोट करते हैं. फैक्ट्री वालों से मेरा कोई दोस्त नहीं है फैक्ट्री वाला. अच्छा. एक आधा है वो भी ऐसे अपने इजोटेरिक इंटरेस्ट दिखाते रहते हैं कि ब्रो गाने सुनते हैं, कुछ करते हैं. एनीवे, तो Morni, mymorni.com, people can check out and follow you on Instagram. Is the brand page on है? Brand page में भी on नहीं कर रहा. My goal right now for the next month is to create more outfits through my personal network and extended network. So I put out that story on my personal space, and I'm gonna create more content. I'm talking to a social media agency or something. कि अभी like I don't want to create a social media page already. Makes sense. तो website ही है. mymorni.com still functional if you want to buy. mymorni.com. Co-create, sorry, buy नहीं, co-create. नए ज़माने के नए एले वाले जो words होते हैं. Do that. Co-create, check it out. हाँ. सही bro. Thank you for being on Dostcast. बहुत मज़ा आया.
मुझे भी और कुछ कहना चाहता है? नहीं, बस यही है, क्या बोलूँ और। तू बता क्या कहना चाहता है कुछ अलग से. ये बड़ी अच्छा लगता है आके बोल के. आई मीन But yeah, I hope that that it's not a brand, but whatever this is, I It's a hope it does well. platform. It's a platform. yeah, there's a tech play to it also, right? This is V 0.01 कि अभी I'm using type form and a standard form, but it's a whole app, like as you will see and explore कि मतलब I really think there's a big opportunity here to create a more of a technology play on. I mean, इसमें AI भी थोड़ा आता है, इसमें customization भी आता है, but there is a need for an interface where people can visualize their pieces and then कि बहुत amazing चीज़ भी है कि पहले AI से तुम art generate करो, जैसे मैंने भी मशरूम वाला बनाया था. I woke up on a Saturday right before India Art Fair and I was like, I need some pants, right? So I had this Kala cotton fabric. Woke up, punched in on my Mid-Journey AI about, hey, I want like mushroom embroidery art, Kantha style on hemp fabric, and it produced some variations of it. And then I picked one of them, printed it out, took it to my embroiderer, and he created a outline of it. And basically, within the next 2 hours, he was able to embroider that piece on the Kala cotton. So within a 6-hour time span, I had an idea. I put it on this AI. I gave it to a human who turned that AI visual with his hands into stuff on a Kala cotton fabric, which came from Gujarat. So your pant in 6 hours. And the next day, I wore those pants to India Art Fair, and they looked sick. So, you know, that's, I mean, the 6-hour turnaround is not going to be possible for Everyone else कई लोग सोच रहे हो. But हाँ, अरे owner तो कर ही सकता है. Yeah, and it's a great like bridge between AI. I did not know this AI part. Yeah. The mushroom art is on AI, and I've documented that. मतलब, kind of want to make a reel out of it, but I suck at reels. कोई बात नहीं भाई, one step at a time. हाँ. पहले कपड़े पहन लिए हैं. I think that's where we can cap it off at and see what happens. Once again, CTA, mymoney.com, check it out. I'm wearing my first Dostcast tee. I'm super excited क्योंकि मतलब सुमित ने ये लोगो बनाया था, पर हम उसे कहीं देख नहीं पा रहे थे. अभी फिजिकल लाइफ में आ गया है, तो अब मैं इसको धोऊंगा नहीं और पहनता रहूँगा. Yeah, anyway, this is my good friend Hardik and Dostcast. Don't forget to subscribe. See you all next Tuesday and Friday whenever the next Dostcast comes out. Bye bye. Take care. Sayonara. Namaste. Jai Mushroom. Jai Mushroom.